Hello everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म और इनके चैनल का नेम है इंडियन मॉन्ग। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। The universe is a mystery that has always puzzled mankind. How was it created? And who is responsible for creation? In Hinduism, there are many theories about how the universe was created in the earliest days. Let's explore some of them. In Hinduism, the universe is not one single entity. There are an infinite number of universes that are constantly being created and destroyed. In other words, we live in a universe that belongs to a multiverse. A universe will ultimately die, but the multiverse lives on. Lord Vishnu is a personification of this multiverse. According to Hinduism, Lord Vishnu was asleep in the cosmic ocean of all causes before the creation of the universe. His bed is a giant serpent with thousands of cobra-like hoods. The universe was created in a triad of roles: creator, maintainer, and destroyer. Lord Vishnu is the maintainer. Lord Brahma is the creator. Lord Shiva is the destroyer. The universe was created through the actions of Lord Vishnu, who slept and let a lotus bloom from his navel. The lotus stem represents the creation of the universe, while Brahma is found at the flower's center and represents the creator. The time it takes for one universe to be created and the next one to end is also the duration of one breath of Lord Vishnu. When he exhales, thousands of universes come into being and a new Brahma is born in each one. But when Lord Vishnu inhales, all universes get sucked in and Brahma dies. Lord Brahma represents the universe that we live in. He creates all life forms and is responsible for the physical world that we live in. Lord Vishnu is the personification of the eternal multiverse. He is responsible for the continuation of life in all universes. Brahma is the representation of our temporary physical universe, while Vishnu is the representation of the eternal multiverse that exists forever without any beginning or end. The current universe represented by Brahma is not permanent. In fact, it's quite temporary. Brahma only lives for 100 years and then he dies and a new universe will be born. Now, let's talk about time measurements. Brahma lives for 100 years and each year of Brahma has 360 days. And we are currently on the first day of the 51st year of his reign. There are day and night. During the day, Brahma creates life, and during the night, all life he created is absorbed back into him. Therefore, we will only be there for this day of Brahma, which is the first day of his 51st year. But don't be sad. Let me promise you that this is quite a long day. Yug, large units of time. Think of Yug as a unit of time that is measured in thousands to millions of years. The Vishnu Puran, an ancient Hindu text, has details about these Yug measurements. A Mahayug is made up of 4 sub-yugs that are distributed in the ratio of 4:3, 3:2, 2:1. In a Mahayug, the Kali Yug is the shortest yug and lasts for 432,000 solar years, followed by the Dwapar Yug, which is twice as long as 864,000 years. Then there's Treta Yug at 12,96,000 years, and finally the Satyug, which is 17,28,000 years. So in all, a Mahayug on earth lasts for
4.32 million years. Manvantar. The next major unit of time after a Mahayug in ancient Indian text is called Manvantar. At the beginning of a Manvantar, new life forms are created, and at the end of it, those life forms are destroyed. This is how the cycle of life goes on in the ancient Indian texts. One Manvantar is said to last for 71 Mahayug, or 71 multiplied by 4.32 million years. This works out to be around 306.72 million years in total. According to these ancient texts, all life on Earth will eventually be destroyed after 306.72 million years of evolution. Interestingly, around 252 million years ago, the Earth experienced its largest mass extinction event. Most species on Earth were killed, including nearly 90% to 96% of all insects. This was also the only mass extinction period of insects on Earth. After each mass extinction of life forms, there is a period of recovery called Sandhikal. This period lasts for one Satyug, or 1.728 million years. According to the latest estimates from modern science, it is believed that it took around 10 million years for life on Earth to recover after the Permian-Triassic extinction event. As you can see, it took our planet 10 million years to get back to its feet after suffering the greatest mass extinction in history. Kalp, day of the Brahma or universe. The universe has a day too. Just like our day on Earth is called Kalp, the time period for one Kalp is said to be equivalent to 14 Manvantars and their Sandhikal. So, there are 14 Manvantars and 15 Sandhikals in a Kalp. During the Sandhikal before the first Manvantar, no life has evolved yet. So, one Kalp equal to 14 multiplied by 306.72 million years plus 15 multiplied by 1.728 million years, which makes it one Kalp equal to 4.32 billion years. On the universal scale, one day is said to be 4.32 billion years long. This day is divided into a period of creation, where life forms are created, and a night period during which no creation takes place. Each of these periods is also 4.32 billion years long. In other words, one day of Lord Brahma on the universal scale is 8.64 billion years long. It's interesting to note that, according to modern scientific discoveries, the oldest life form on the Earth is 4.28 billion years old. Mahakalp, Kalp, a unit at universal scale, is further extended with days and years similar on Earth, so that a month at the universal scale is 30 Kalp, that is 30 universal days, and a year at the universal scale is 12 such universal months. This enables life forms to rise and fall in accordance with the karma they have earned. On the universal scale, 100 years are defined as the lifespan of a universe. This is called a Mahakalp. A universe is said to end at the end of its 100 years of age. So, the lifespan of an entire universe is 8.64 multiplied by 30 multiplied by 12 multiplied by 100 billion years, which totals to around 311.04 trillion years. The ancient Indian texts says that our universe is currently on the first day of its 51st year. During this day, we are in the Kalyug of the 28th Mahayug of the 7th Manvantar. So, we have come to the calculation once again. According to ancient Indian texts, the age of the universe is 50 universal years plus 6 Manvantars plus 7 Sandhikal plus
28 Mahayug, 50 universal years equal to 8.64 multiplied by 30 multiplied by 12 multiplied by 50 billion years equal to 155,520 billion years. 6 Manvantars, 6 multiplied by 306.72 million years equal to 1,840.32 million years. 7 Sandhikal, 7 multiplied by 1.728 million years equal to 12.096 million years. 28 Mahayug, 28 multiplied by 4.32 million years equal to 120.96 million years. So, the age of the universe as per ancient Hindu texts is 157.49 trillion years. Modern science tells us that the universe is around 13.799 billion years old. However, ancient Indian texts predict a much longer timeline. Ancient Indian texts says that the age of the universe is around 311 trillion years. This video is only an attempt to appreciate the great scale of time on which ancient Indians were working. We do not come across any other ancient civilizations that talk in terms of billions or trillions of years of calculations with specific names given to such large periods of time. Like the famous American cosmologist Carl Sagan said in his book Cosmos, the Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. It is the only religion in which the time scales correspond to those of modern scientific cosmology. Its cycles run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma, 8.64 billion years long, longer than the age of the Earth or the Sun and about half the time since the Big Bang. Thank you so much guys for watching this video. If you liked it, like, comment and subscribe if you haven't already. सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग टाइप की वीडियो थी। और बहुत ज्यादा नॉलेज बहुत ज्यादा नॉलेज हमें मिला हिंदुइज्म के बारे में कि वो कैसे जो है वो देखते हैं कि जो यूनिवर्स है वो कैसे जो है वो बिल्ट हुई है। मतलब अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म जो पूरी यूनिवर्स है उनके मतलब हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग बनाई गई और किस तरह से बनाई गई है, एक एक चीज का उनके पास प्रूफ है। भाई मैं तो हैट्स ऑफ उन हिंदू जो मैं क्या कहूँगी राइटर या उस दौर के जो लोग हैं जिन्होंने इतना कुछ संभाल के रखा, इतनी नॉलेज है उनके पास। नो डाउट ये तो हमें पता है कि हिंदुइज्म जो है ये बहुत पुराना रिलीजन है, सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। और जो ये हिंदूज सिविलाइजेशन है या आप ये कह लो कि इंडियन सिविलाइजेशन है वो भी बहुत ज्यादा पुरानी है। बहुत जगहों पर वहाँ उसके असरात जो हैं हम हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी यही है और सबसे ओल्डेस्ट जो रिलीजन है वो भी यही है। बहुत भाई माइंड ब्लोइंग था मेरे लिए। और एक एक चीज को कि कैसे जो इनके लॉर्ड विष्णु थे कि मतलब उनका फिर बेड के बारे में बताया कि वो इतना जाइंट किस्म का बेड था जिसपे वो लेटे थे और उनकी बेली बटन से वो जो है वो एक प्लांट जा रहा था बिफोर मतलब यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले की बात है कि वो कैसे फिर जो है वो क्रिएट हुई। फिर वो जब उन्होंने सांस लिया तो वो कितने सारे जो है वो छोटे छोटे से यूनिवर्स थे मतलब बने थे। और मतलब जब वो सांस इनहेल करते थे तो मतलब कि डेथ है, मतलब इंसानों की जो दुनिया में इंसान है उनकी डेथ है, या कोई भी इंसान जानवर अशरात जो भी उनकी डेथ है, उससे मुराद डेथ था। लेकिन जब वो सांस लेते थे लॉर्ड ब्रह्मा ब्रह्मा थे, लॉर्ड ब्रह्मा थे, उनका जो है लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर के एज ए क्रिएटर है ना, थे। लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटर है, नहीं लॉर्ड विष्णु जो है वो क्रिएटर थे, लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो मेंटेनर थे और एक और लॉर्ड थे वो डिस्ट्रॉयर थे। तो खैर बहुत ज्यादा नॉलेज हमें भी मिली और इतनी मतलब इतनी साइंटिफिकली ये प्रूवन है। वैसे मैंने बहुत सारी देखी है वीडियोस में भी और बहुत सारा मतलब जितनी हम वीडियोस देखते हैं हमें हमारे मतलब नॉलेज में इजाफा होता है, हमारे पर्दे जो है वो खुलते रहते हैं अबाउट हिंदुइज्म। जैसे हमने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा और इस वीडियो में भी बताया गया कि मतलब मैथ्स जो हो गया, साइंस हो गया
ये काफी सारी जो चीजें हैं वो सबसे पहले इंडिया में जो है वो इसका हुआ था, मतलब एक्सप्लोर की गई थी। तो इसमें भी यही बताया हुआ था। तो खैर वीडियो जो है हमने बहुत ज्यादा एंजॉय की, होप सो आप लोगों ने भी एंजॉय की होगी और आपके नॉलेज में भी जो है वो बहुत ज्यादा एज वीडियो देख के जो है वो इजाफा हुआ होगा। और ऐसी वीडियोस देख के हमारे जो नॉन मुस्लिम होते हैं या जो हिंदुइज्म के बारे में नहीं जानते होते, उनके वाकई जो है नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होता है कि जो हिंदुइज्म है वो यूनिवर्स के बारे में क्या सोचते हैं या कैसे बनी है। मतलब जाहिर सी बात है, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं हर रिलीजन के, और इसी तरह से जो हिंदुइज्म है उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हमें आगाही मिली, और उनके कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऑथेंटिक हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब जो ओल्डेस्ट साइंटिफिक व्यूज थे वो भी, और जो मॉडर्न साइंस है उनके अकॉर्डिंग भी उन्होंने मतलब ओल्डेस्ट के अकॉर्डिंग भी बताया और मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी बताया। तो भाई साइंटिफिकली जो चीज प्रूव है और वो तो है ही है। और दूसरा भी बहुत सारे जो उनके अकीदे हैं, जैसे कि अक्सर मैं वीडियोस में बात करती हूँ कि सन को पूजने वाली बात या ये, तो वो साइंटिफिकली ये सारी चीजें करते हैं कि साइंटिफिकली प्रूवन होती है कि ये चीज हमें ये चीज दे रही है, तो इसलिए हम उसको वो कर रहे हैं। तो खैर मुझे तो फुल ऑफ साइंटिफिक ये वीडियो लगी जो आम इंसान की अकल से भी दूर है। और एक एक चीज की उन्होंने मैथमेटिकली जो है वो मतलब उसका निकाला हुआ था कि इतने ट्रिलियन या इतने बिलियन यूनिवर्स का बनता है। अभी तो फर्स्ट 51 ईयर से गुजर रही है जो यूनिवर्स है। हाँ, तो खैर बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थी ये वीडियो। होप सो आपको भी हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दे हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज। 𝐿𝐴